अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद आप सबको MSP पॉडकास्ट सीरीज़ के सेकंड एपिसोड के साथ। मैं हूं आपको होस्ट मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं फरहान, खुर्रम, वलीद बाबर और मोहम्मद हुमैस। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे जो पिछले हफ्ते में न्यूज़ हुई है F1 वर्ल्ड के अंदर, स्टार्टिंग विद सिरिल क्विटिंग रेनो। वलीद, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट? Totally unexpected ओके, because he's been doing the job he was signed up to, um, he was signed up to do. So it came as a surprise because Renault have only climbed up since they rejoined Formula One in 2016. So I was not really expecting Cyril to not be a part of team. Um, you know, once they rebranded as Alpine. because So yeah. most of the people kind of memed it as calling it the Alonso effect, जैसे ही Alonso ने साइन किया है। No, it's not the Alonso हाँ, effect. I think हाँ, it was obviously, probably part of their long-term plan, like even before this season. So yeah. it may be that. Hmm. And honestly, there's not much clarity right now. So it'll be a bit pointless to speculate things. So, Fran, you would like to add anything? Sure. All right. So basically, सिरिल का यार थोड़ा इट इज शॉकिंग क्योंकि जब एल्पिन की जो है वो एंट्री अनाउंस हुई थी तो उसके अंदर सिरिल का यही था कि सिरिल जो है वो उसको टेक ओवर करेगा और लीड करेगा फर्दर। Okay. लेकिन और सीजन के स्टार्ट होने से पहले ही जो है उसका डिपार्चर इन्होंने अनाउंस कर दिया रेनो ने। तो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग कि इनके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। एक तरफ तो ये लोग एक ब्रांड न्यू जो है ना वो यानी कि अपनी ब्रांड न्यू आइडेंटिटी लेकर आ रहे हैं एल्पिन की और उसको जो है ना वो इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं अपने Yep. ओवरऑल जो है ना वो एक जो इनका कंपनी स्ट्रक्चर है और उसको Hmm. फर्दर ताकि वो प्रमोट हो सके। सो Yeah. उसके उस लिहाज से मेरे नज़दीक जो था ना सिरिल एटलीस्ट अगर इनको रखना भी था सिरिल को एक साल तो उसमें रखते और उसकी जो ट्रांजिशन थी वो इसकी ग्रेजुअल होनी चाहिए थी। सो Hmm. इट्स अ प्रीटी पॉइंटलेस थिंग कि इन्होंने अचानक जो है ना उसको निकाल दिया है। Because However, न्यू मैनेजमेंट के साथ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत होना था। अब होगा, आई गेस थोड़ा इफेक्ट होगा कि शेकी थोड़ा स्टार्ट, आई गेस वी कैन एक्सपेक्ट। इफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। बाकी ये कहना कि अलोंसो की वजह से हुआ तो नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ यार। इट्स नॉट कि भाई अलोंसो जो है ना वो अप इन द हायरार्की है और वो वहां से जो हाँ। है ना वो सारे के सारे डिसीजंस वगैरह ले रहा है। ये चीज उसके हाथ में भी नहीं है कि कौन हम्म। टीम बॉस है कौन टीम बॉस नहीं, स्पेशली हम्म। कंसीडरिंग कि सिरिल ऑलरेडी जो था ना पिछले 4-5 साल 2016 से जब से टीम चल रही तब से आई या थिंक वो जो था स्टार्टिंग में फ्रेडरिक वजीर था लेकिन उसके बाद ये आ गया था। सो उस लिहाज से जो है ना वो बनता नहीं है। हाउएवर ये कह सकते हैं कि गिवन कि रेनो की जो रेनो ने सिर्फ अब आके जो था वो इम्प्रूव करना स्टार्ट किया था 2016 17 18 बहुत कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं रही इन सब सालों के अंदर, यानी कि हुई भी है तो ग्रेजुअली जो है वो अप द लैडर रहे हैं। तो उस लिहाज से वन कैन से कि इट वाज सॉर्ट ऑफ ओवरड्यू या जो उनकी सीनियर मैनेजमेंट थी दे वर जस्ट फेड अप विद सिविल। सही। बट let's see it's totally unexpected and we just can't comment के आगे पड़ा क्या हुआ, आगे होगा क्या। सही। And I would like to add he was actually very close with the board members, so him हम्म। leaving the team was a huge surprise. Okay. What about the livery? You saw the testing livery. What do you make of it? Um, I don't know. It's just a testing livery. It's never going to be on the actual race car, so it doesn't mean anything. Okay. दूसरा क्वेश्चन ये है अबाउट लुइस कॉन्ट्रैक्ट के लुइस ने अभी रिसेंटली था कि डिमांड आई थी कि लुइस वांटेड $50 million, तो आगे से रिजेक्शन आ गई। तो इट्स स्टिल नॉट डिसाइडेड कि इट्स क्वाइट अ बिग थिंग कि उनका 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है और अभी तक उसकी कोई डील्स फाइनल नहीं हुई। तो थोड़ी स्पेकुलेशन भी आना शुरू होगी कि मे बी जॉर्ज रसल माइट बी इन फॉर अ चांस ऑफ दैट मर्सिडीज सीट। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? Yeah. So I would like to say that rumors are just rumors, and they don't really mean anything until something is confirmed by the higher authority at Mercedes or or Daimler themselves. But there is nothing but pure speculation. Journalists are just making up stories, and like just 2 days ago, I was reading this guy who was who was saying that Mercedes livery is going to be uh,
Mercedes livery is going to remain black for 2021, and Hmm. Lewis is still talking to Mercedes, and both parties are talking to each other, and they're just making up news out of nothing. You know, Yeah. everyone knows since the last 2 or 3 months that Mercedes livery for 2021 is going to be black, and yet that guy is reporting it just now. Okay. Just trying to make news out of nothing. Hmm. So there is a lot of that going on, and and personally, in my opinion, I don't think Mercedes is that stupid to let a seven-time world champion walk away over $5 or $10 million extra, because uh, Michael Schumacher used to get paid like I think 80. I think he got paid 84 million back in the day during Wow. Ferrari's winning years, Okay. and if you upscale that to today's economy, that would come out to like 90 to 100 million. No. 90 to 100 Damn. million in today's money. Wow. And Lewis is asking, even if he's asking, we don't know if he's asking for a raise. We Hmm. don't even know that, you know. ये भी And है. people are making up these demands just because it's social media and, all this stuff. It's getting a bit out of control, but I think they will sign eventually. Like Yeah. Lewis can even sign just 2 hours before preseason testing starts. Yeah. That's how much leeway he has right now, Yeah. and Mercedes knows his value. Yeah. Mercedes and Lewis knows that Mercedes is the right place to be, because there's no other Yeah. team he can go. Yeah. There's no other team he can go to, right? Also, like, Because all even other if seats he's are taken. demanding, like 5-10 mil more, he deserves every penny of it, I believe. Yeah, like he's the most successful Formula One driver of all time right now, Uh-huh. right? You can't even make an At this exception current for point in 5 mil. time, like Ricardo asked for 50 million for 2 years at Renault. Oof. 50 million for 2 years at Renault that he Yeah. just spent there, right? Yeah. And Okay. everyone is getting mental over Lewis asking 50 Uh, for Mercedes. yeah. Uh, Even though he's the more deserving driver, he's a seven-time world champion, and it's a bit hypocritical. Yeah. And yeah, that's all I have to say about that. Humais, you'd like to add something? I think, yeah, just agree with जो वलीद ने बोला है कि he's a world champion, seven-time world champion, and deserves it. I mean, Okay. thing is between Lewis and George is like, अगर कार अच्छी है ना तो लाइक जिन बुरे दिनों में कार परफॉर्मेंस अच्छी आ जाती है, इटली का ले लें एग्जांपल, जब Hmm. बॉटस लिटरली स्ट्रगल कर रहा था एंड देन लुइस हैमिल्टन बैक ऑफ द ग्रिड पेनल्टी के साथ ही फिनिश्ड अहेड ऑफ बॉटस, आई थिंक, राइट, अगर मुझे सही से याद नहीं आ रहा. सो जॉर्ज रसल एक्चुअली जो है, लाइक, ही कैन ड्राइव अ गुड कार बट ही कैन नॉट मेक अ बैड कार गुड. ही कैन नॉट, उसके बाद अभी वो एक्सपीरियंस है नहीं लुइस वाला कि वो Sorry. लाइक कार को अच्छा ही रहता रहे, क्योंकि मर्सिडीज जो है वो ग्रो करती रही है हर साल एंड Yeah. इट्स बिकॉज ऑफ द फीडबैक. सो अगर एक कार को आपने रखा है अच्छा तो इट्स फ्रॉम फीडबैक. सेवन टाइम वर्ल्ड चैंपियन का फीडबैक तो और ज़्यादा होगा कंपेयर टू अ गाय हु हैज जस्ट लाइक 3 points of, I don't know, 4-5 points. Yeah. 3 points. एंड Right. प्लस आयरटन सेना 1993 में मैक्लेरन से 1 मिलियन मांग रहा था एक रेस करने के लिए. लाइक उसको रहना भी नहीं था मैक्लेरन में, ही वांटेड टू गो टू विलियम्स. Sorry. Pran? Yeah, yeah. There's so many points that I want to raise regarding this. First of all, to say कि भाई जॉर्ज रसल को मर्सिडीज कंसीडर कर रही है हैमिल्टन की जगह, और हैमिल्टन जो है वो उसका जो है वो चूंकि पैसे बहुत ज्यादा मांग रहा है तो इस वजह से इट्स ऑल ridiculous. It's ridiculous on so many levels. Like, he's the 7 times world champion. He's statistically the most successful driver in F1 history right now. What is George Russell? श्योर ही इज अ वेरी टैलेंटेड ड्राइवर, श्योर उसके पास स्किल्स हैं बहुत ज्यादा, श्योर उसने एग्जिबिट किया उस चीज को, लेकिन ही डजंट हैव द एक्सपीरियंस. उसके पास वो नॉलेज या वो एक्सपीरियंस नहीं जो हैमिल्टन के पास है, जो उसको 14-15-16 साल फार्मूला वन में हो गए हैं, और उसने मल्टीपल डिफरेंट एराज, वेदर इट बी द V8, वेदर इट बी the V6, or be it, ये जो and he's been regulation through है, so the many. bigger wheelbase cars, basically जो भाई हैं. Exactly, Sir, he's why been did so much revolution. If we consider the 2007 car, F1 car, comparing to the 2020 F1 car, they're entirely two different beasts.
तो वो एक इंटायरली उसका एक नॉलेज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिफरेंट है बहुत सारे लेवल्स के ऊपर. तो इस चीज कंपैरिजन में लाना ही टोटली अजीब चीज है. दूसरी बात ये कि हैमिल्टन अगर ज्यादा पैसे मांग भी रहा है तो वाई इसमें यानी कि कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा कि ही इज एन एथलीट, वो रिटायर हो जाएगा 3-4 साल में रिटायर हो जाएगा. सो ये उसकी ऑप्टिमम टाइम विंडो है जिसके अंदर उसने एज मच मनी एज पॉसिबल बनानी है. उसके बाद ये पैसे उसके इन्वेस्ट होंगे और उसके बाद जो उसके बिजनेसेस वगैरह या दूसरे वेंचर्स होंगे उसमें वो कमाएगा. फॉर्मूला 1 वुड नॉट बी a stream of revenue for him after that. तो उसकी यही विंडो है जिसके अंदर उसने वो जो है उस सबको मेकअप करना है. सो व्हाई इज इट अ बिग डील? बड़े बड़े एथलीट्स को पैसे मिलते हैं, वो भाई ही इज अ ब्रांड इन हिमसेल्फ, ही इज अ ब्रांड इन हिमसेल्फ. उसके अलावा फर्दर Mercedes is not stupid. Mercedes is not stupid because they know कि Lewis Hamilton कितने ज्यादा sponsorships और brands को लेकर आता है टीम में, जो कि जॉर्ज अभी नहीं ला सकता. For example, whether it be Tommy Hilfiger or whether it be police or whether it be like I think even Ineos, I'm not sure, but I think Ineos भी जो है उसमें Lewis का हाथ था. लेकिन जो इससे पहले मैंने 2 ब्रांड्स बताए हैं वो दोनों के दोनों तो Lewis ही लेकर आया हुआ Mercedes पे. तो उस लिहाज से यानी कि जो स्पॉन्सरशिप्स वो लेकर आ रहा है और जो वो एक्सपोजर दे रहा है उसको ओवरऑल फैशन इंडस्ट्री के अंदर और हर जगह पे. सो Mercedes इज नॉट स्टूपिड. देयर इज नॉट जस्ट अ परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज अनदर एंटायर डिफरेंट साइड जो कि बिजनेस साइड होती है, जो कि इकोनॉमिकल साइड होती है, जिसको कंसीडर किया जा रहा होता है कि भाई इसमें स्पॉन्सर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, सारा कुछ. तो इट्स नॉट दैट इजी अ थिंग. लास्टली मैंने रिसेंटली एक पिक्चर भी शेयर की थी जिसमें जो था वो AMD की जो थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसके अंदर Lewis Hamilton ऑफिशियली मर्सिडीज टी-शर्ट पहन के बैठा हुआ था. Hamilton was wearing that t-shirt at an official sponsor event, and at a sponsor event that also sponsors the team. यानी कि वो मर्सिडीज के ही स्पॉन्सर के ऑफिशियल इवेंट पे मर्सिडीज की टी-शर्ट पहन के बैठा हुआ था when he is technically unemployed or the way they call it. तो उस लिहाज से personally, from what I believe, the deal is done and dusted. They have it signed or something like that. They're just not announcing it, and they're not supposed to announce it unless they want to. तो इसमें कोई वो पाबंद भी नहीं है कि वो बताएं कि भाई नहीं भाई ये तो साइन हो गया है, हमने कर लिया है. नहीं, जरूरी नहीं है भाई. इवन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली होते हैं, निगोशिएशन वगैरह, पहले रूमर्स तो पहले के आगे होते हैं. जैसे अब सर्जियो पेरेस का था, ही वाज सपोज्ड टू गो टू रेड बुल, और निगोशिएशन कब की पता नहीं शुरू हो गई थी, व्हेन ही हैड नो चांस बट रेड बुल. जिस तरह एस्टन मार्टिन का था वेटल के साथ, उसकी भी कब पता नहीं कब से निगोशिएशन चल रही हो, तो वो एक टाइम पे रिलीज हो गई थी ना कि ऑफिशियल हो गया होता. नाउ दे आर मूविंग टू द नेक्स्ट टीम. सो या एग्जैक्टली यू नेवर नो वो हाइप बिल्ड कर रहे हैं, यू नेवर नो, क्या पता वो हाइप बिल्ड कर रहे हैं. हाँ, ये राइट. तो एंड दिस इज टोटली नॉर्मल. टीम्स, बड़े ब्रांड्स सब ऐसे करते हैं. सो ये सारे के सारे पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल वो पैसे इतने क्यों मांग रहा है और उसको पैसे इतने मिलने नहीं चाहिए, और जी वो लास्ट ईयर मेसी भी सेल पे था. एग्जैक्टली Remember the hype? फुटबॉल के अंदर एग्जैक्टली $600 million for Messi. Yeah. Moving on. Anyway, moving on. Next topic is McLaren's prospects with the Mercedes power unit. Obviously, सबको पता है कि McLaren are moving to a newer power unit. That is the Mercedes. काफी expectations है McLaren से भी. Yeah, McLaren has expectations के maybe they can remain a front-running team and challenge for the wins maybe and stay in the podiums, etc. What are your thoughts, K? McLaren, how can they make this smooth transition from a different engine supplier to now Mercedes? So, honestly, I'm not really expecting much because engine swaps can go wrong all the time, and that has to be kept in mind while you're are trying to expect something from a team. So, I think they will do the best they can because they're limited by the tokens. Because the token system was introduced to balance things out for 2021, so all teams don't end up overspending this year. And partly because they also have the budget cap this year. I think 145 million. Yeah. And with a token limitation, they cannot make too many changes to the chassis and the aero bits around it. So they're very limited in that area. So whatever changes they can make with the tokens
That's it. So the car might not be as good as it was in 2020. Like it could be better than the last year's car, but Mhm. it might not be as strong as relative to the rest of the cars on the grid. Uh, uh, Aston Martin could overtake them, Renault could overtake them, Yeah. and AlphaTauri could overtake them. Yeah. Like things can almost always go wrong, Yep. but they have a big task at their hand. Hmm. I hope they do well because 2021 is more of a transitional year. Yep. The season that matters is 2022 Yep. because they will walk into 2022 knowing how the Mercedes power unit works and Yeah. uh, how the fitment is, how Yeah. everything. They'll have to design the car around the engine. Because Racing So Point basically, which is now transitioning to Aston Martin, they are yeah, quite used to the Mercedes engine. So it's they, quite a no-brainer. I yeah. think they will be more stable than McLaren. No, it's different for Racing Point slash Aston Martin because they buy most of the parts from Mercedes Okay. Formula One team, right? Okay. Like they buy the gearbox, um, they buy the suspension as well. So they don't have to manufacture a lot of the things that McLaren has to. McLaren makes their own suspension, McLaren makes their own gearbox, Okay. Nice. So there are things like this that have to be factored in because uh, the gearbox is crucial. You can't have the wrong gear ratios throughout the whole season because that's going to cost you a lot. So there are a multitude of things that can, really affect McLaren's season, but I hope they do well. Okay. Yeah. Farhan, anything you'd like to add? हाँ यार मैक्लेरन के जो प्रॉस्पेक्ट्स थे उस पे मैंने वो ये कहना था कि जस्ट लाइक वलीद सेड कि इंजन चेंजेस कैन गो एब्सोल्युटली रॉन्ग तो पर्सनली अगर मेरे से कोई पूछे लाइक द वे आई वुड लाइक टू पुट इट कि मैं खुद एक मैक्लेरन फैन बॉय हूँ राइट तो उस लिहाज से अगर कोई मेरे से पूछे कि यार इफ आई एम excited for McLaren Mercedes reunion in 2020 indeed I am लेकिन अगर मेरे से कोई ये पूछे कि मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ तो trust me I am mentally ready I'm mentally prepared कि McLaren might finish as low as 7th or 6th I mean इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि डरने वाली बात नहीं है या इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि बहुत जो है ना ये खराब हो गया आई मीन McLaren has previously finished 9th as well तो लेकिन द थिंग इज कि इट्स नॉट अबाउट द शॉर्ट टर्म प्लान्स इट्स द लॉन्ग टर्म प्लान्स जैसे वलीद ने कहा कि 2021 जो है वो एक ट्रांजिशनल ईयर है और इट्स मार्किंग द एंड ऑफ एन एरा द मेन डील इज 2022 कि McLaren जो है वो और ये सिर्फ McLaren नहीं सारी की सारी टीम इवन विलियम्स भी जो है वो सब की सब टीम्स जो हैं वो सारी उनका मेन फोकस ही 2022 की कार है जो 2020 वाली ही कार 2021 में कैरी ऑन हो रही है काफी हद तक तो रेगुलेशन फ्रीज हो गया था और उसके बाद आपके 2021 के अंदर जो है वो इट कुड बी वेरी लाइकली कि सारी की सारी टीम्स जो है वो मोस्टली अपनी ज्यादातर जो है वो डेवलपमेंट जो है वो मिड सीजन फिनिश कर देंगी उसके ऊपर उनका सारे का सारा प्राइम फोकस जो है ना वो फुल टाइम 2022 के ऊपर ही होगा टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दोस रेगुलेशंस तो इस लिहाज से ये जो यानी कि मर्सिडीज पावर यूनिट को लेकर आएंगे तो उसमें जो है 2021 इट वुड जस्ट बी अ ट्रांजिशनल ईयर एंड स्टार्टिंग ऑफ अ पार्टनरशिप असल जो है वो यानी कि कब मटेरियलाइज होगा और जो नया इंटायरली मर्सिडीज के अकॉर्डिंगली शासी वगैरह बनेगा और ईच एंड एवरीथिंग वो 2022 में है रेनो के साथ 2018 के अंदर जब मैक्लेरन ने स्टार्ट किया था तो अलोंसो फिनिश P5 इन ऑस्ट्रेलिया राइट लेकिन ओवरऑल दैट रेनो पावर यूनिट वाज नेवर मेंट टू बी इन दैट शासी वो बना ही होंडा के लिए था तो लेकिन और वो उसके बाद में फिर हमने देखा भी कि उसमें बाद में किस कदर जो थे वो प्रॉब्लमेटिक हुआ और कितना ज्यादा वो उसके अंदर इश्यूज थे उसके अंदर लेटर ऑन सीजन में आगे जाके तो इसलिए इसी वजह से इतना ज्यादा एंटिसिपेट अगर मैक्लेरन लेट्स सपोज मैक्लेरन जो है वो परफेक्टली मैनेज कर लेती है इंटीग्रेट करना एक मर्सिडीज इंजन को उसके अंदर और सारा कुछ जो है वो इट गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान तो वेल एंड गुड ये तो बहुत अच्छी बात है तो व्हाई नॉट आई मीन McLaren could finish P4 P3 or like P5 लेकिन अगर McLaren से नहीं भी हो पाता तो इट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट because that means they're obviously focused on 2022 और इस सीजन को जो है it would be just be a transitional year यानी कि इसके अंदर जो है द इंजन चेंज कैन गो रॉन्ग एंड टोटली फाइन इसमें कोई जो है ना उसमें डरने डराने वाली बात नहीं है सही Staying on topic with McLaren,
their Formula E plans. They have sort of confirmed a slot. They can afford to join Formula E, but still not sure. So, what are your thoughts about that, Fran? Yeah, regarding Formula E, I cannot say much because I haven't really followed Formula E for right from the beginning. But yeah, one thing that is for sure is I think McLaren will not just keep it as an option. They will Okay. actually compete in the series, and there is a very solid reason for that because McLaren has already been involved in Formula E for many years now. काफी लोगों को इस बात का नहीं पता होता स्पेशली, और मुझे भी बड़ी हैरानी होती है जब लोगों को नहीं पता होता, लेकिन मैक्लेरन जो है वो बैटरीज वाली साइड पे, आई थिंक इफ माय नॉलेज इज करेक्ट, तो बैटरीज की साइड पे जो है वो फॉर्मूला ई में इन्वॉल्व है, ऑलरेडी इन्वॉल्व है। Okay. और उसके अलावा मेरे ख्याल है और भी काफी टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड जो है ना वो वेंचर्स हैं जिनमें फॉर्मूला ई के अंदर मैक्लेरन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है ऑलरेडी। McLaren Applied Technologies used to supply batteries in Series Yeah, 1 yeah. FE. Thanks for adding it to my knowledge. Thanks. हाँ, तो उस लिहाज से मैक्लेरन की जो है वो ऑलरेडी एक इन्वॉल्वमेंट है, और अगर उन्होंने ये ऑप्शन जो है वो साइन की है तो दे हैव इट डन फॉर अ रीजन, दे हैव डन इट फॉर अ रीजन। तो उस लिहाज से आई थिंक मैक्लेरन विल कम्पीट इवेंचुअली, और एंड आई मीन व्हाई नॉट, बिकॉज अगर हम देखें तो दे आर ऑलरेडी आई मीन कंसीडरिंग देयर एंट्री इनटू LMDH, बिकॉज और उनका इंटायरली पॉइंट भी स्टार्टिंग में यही था कि दे वांट टू कम्पीट बोथ इन IMSA एज वेल एज इन WEC एट द सेम टाइम। और जब अभी इस बारे में सही जो थी वो कंफ्यूजन चल रही थी कि वेदर इट वुड बी लाइक LMDH और LMH, जो भी हिसाब था, तो वो वहां पे भी कम्पीट कर रहे हैं। इंडी कार के अंदर भी उन्होंने फुल टाइम अपनी एंट्री की, वहां पे भी कम्पीट कर रहे हैं, Formula 1 में भी कर रहे हैं। इट जस्ट मोर रेसिंग सीरीज, मोर स्पॉन्सर्स, मोर एक्सपोजर, और इवेंचुअली इट्स गुड फॉर देयर कार्स बिजनेस। यानी कि इंडी कार यूएस के अंदर है, फॉर्मूला ई जो है इतने कंट्रीज के अंदर, वहाँ पे इनकी जो है वो इलेक्ट्रिकल साइड जो है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह वाली साइड है, वहाँ पे दे वुड हैव अ गुड एक्सपोजर। और फिर इनका फॉर्मूला 1 वगैरह, यानी कि इट्स ओवरऑल गुड फॉर द बिजनेस। सो आई टोटली गेट इट व्हाई दे आर एक्सपेंडिंग, एंड आई मीन दे शुड, इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड आई डोंट थिंक इट वुड जस्ट बी एन ऑप्शन, दे वुड एक्चुअली कम्पीट। ये जस्ट मोर सॉर्ट ऑफ एक तरह से टीजर था कि हाँ हमने साइन कर लिया है, तो इट्स मोर लाइक कि आगे आगे देखो होता है क्या। Say, okay, Waleed, you'd like to add something about that? Uh, I think Farhan said it well, because like the reason they signed an option because they're going to join Formula E, but the only thing we don't know is if they're like joining in their own capacity or they're going to be partnering with another team, right? Okay. That part we don't know yet, Okay. and their partner, I don't know. I hope they can partner with Mercedes, make a McLaren Mercedes Formula E team. That'd be cool. Yes. More in line with Formula One. Yeah, that I would would be subscribe to orgasmic. Yeah. Okay. McLaren Mercedes Formula E Yeah, team. that was sort of more aligned with their project in Formula 1. Yeah. Yeah. Hopefully, McLaren SLR 2.2. It would be all electric then. Okay. But I'm all for McLaren Mercedes Formula E team. Okay. I think that would be cool. Yeah. We all think that would be cool. First in F1, now in Formula E, bring it on. Yeah. Okay. Okay. Moving on towards the last topic is the Toyota's LMH Hypercar. Okay. It has been revealed. It has been on the track. Not much change I can see from visually apart from the rear wing. जैसे ना rear wing के ऊपर थोड़ा बहुत change वाज़ेह है, लेकिन mostly सारा specs के ऊपर ही आया था. So, if you'd like to comment anything on the recent launch of the hypercar, Humais. I think I wouldn't call it hypercar. It's like a LMP 1.5. It's like, हम expect कर रहे थे कि like cars would be like more like a road cars. जैसे GT1 days में था like Maserati MC12. Sorry. ऐसे expect कर रहे थे. But regulations हैं, and then regulations ने उन car को जो है वो form ऐसे किया है, regulations can make the car ugly, can make the car beautiful, can make the car change. Sorry. So I think इसका nose different है front, and इसका shark fin देखें तो shark fin जो है वो lower है, and Right. the rear wing उससे difference नज़र आ जाता है. एंड दूसरी बात ये कि हाइपर कार में जो है वो अब सिर्फ वन किट अलाउड है, लाइक इट्स नॉट लाइक लेमॉ किट एंड देन ऑल सीजन किट. सब
लाइक पूरे सीजन के लिए आपको एक ही किट चलानी पड़ेगी सही एंड सो दैट्स द डिफरेंस एंड इसकी लाइट्स अगर आप एस्थेटिकली देख रहे हो तो लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक टोयोटा शायद लाइट्स चेंज कर दे बिकॉज ये ओके लाइट्स काफ़ी ज़्यादा बीफी हैं सही या देन टेक्निकल जाते हैं साइड पे सो दे इंट्रोड्यूस अ न्यू इंजन फर्स्ट ऑफ ऑल सही 3.5 लीटर इंजन V6 आई डोंट नो टर्बो चार्ज है या नेचुरली एस्पिरेटेड मैंने अभी वो सही से पढ़ा नहीं It is मुझे नज़र नहीं turbocharged. आया था कहीं ओके 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 टर्बो चार्ज it's quite a big displacement for turbocharged to be honest uh, Yeah. and then the car is actually 200 kilo heavier and 200 millimeter longer than last year ओके और Waleed, your thoughts about it? I think it's a good looking car. Like even though it feels like they haven't changed much, but they've increased the wheelbase. Like Humais said, the car is longer now. The car is heavier. It has a 3.5 liter V6 turbocharged engine and a hybrid system that puts out, I think, 268 horsepower, and the V6 engine puts out 670 horsepower. But the LeMan regulations, I think, the new LMH regulations, they say that you can only deploy 670 horsepower at a time, right? Okay So both things won't be deploying maximum power um, whenever they're working together, right? सही Their goal is to match the 670 number. सही So you could be using 500 horsepower from the internal combustion engine, and maybe only 170 from the hybrid unit. So there's that, and this is their race car for the LMS season. The actual road car, it's going to be revealed soon, and it's going to be pretty much the same thing, except it might be more powerful because road cars are not regulated by racing regulations and stuff. So it might have 1,000 horsepower or something, and I think it'll be a cool car. Yeah. Okay, it will be interesting to see it on the racetrack. In एक और चीज़ मैं ऐड करना भूल गया इसमें हाइब्रिड उन्होंने चेंज कर दिया सो इट्स लाइक इसमें जो हाइब्रिड मोटर है वो सिर्फ फ्रंट पे है इंस्टेड ऑफ बीइंग इन द फ्रंट एंड द रियर जो जैसे पिछले साल की कार में था सो ये उन्होंने चेंज कर दिया है Sick. Well, when you're done with this podcast, like it and be sure to subscribe and turn that bell icon on so you can be notified of our latest uploads. That's it for this podcast, and we'll see you next time. Allah Hafiz.